Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon, madam. So, ma'am, I'm going on. You may start with the class. Not clear. What, madam? I'm going on mute, Yeah, yeah. Okay. and you may start with the class. Yeah, after the 1 or 2 minutes, I'll start. Okay, thank you, ma'am. So, good afternoon to all. So, we will start the class within another 2-3 minutes. So, just wait for those who are again joining. We just wait for them. So, after 2-3 minutes, we will start the class. Okay. So, before starting the class, so last class topic packages. So that is packages. So one small is pending. So that is access space, and plus last class some doubts are also there. So that we will clear in another session. And today we are going to start exception handling in Java. Okay. So हमारा आज का टॉपिक exception handling in Java. So how to handle the exceptions. So I think my PPT is visible. Okay, exception handling. So what is an exception means? An exception is an abnormal condition that arises in a code sequence at a runtime, or it is a runtime error. Okay, so exception means it is an abnormal condition. It is not a normal situation. So while running a programs, so there is a chance of an abnormal condition in the program. So abnormal means the word abnormal, it is clear. It is not normal. So normally we can run the program. So as for running the program, there is okay. While compiling, it's okay. There is no error means we can run the program. But while running, there is a chance of error. So that is the runtime error or exception. So
एक्सेप्शन का मतलब इट इज एक abnormal कंडीशन इन हमारा प्रोग्राम का अंदर मीन्स नॉर्मली प्रोग्राम में एरर का भी कैसे आएगा और रन टाइम में नहीं है, कंपाइल टाइम में आएगा। नॉर्मली ऐसा है, एक जावा प्रोग्राम मीन्स वो कंपाइल टाइम में एरर दिखाएगा, तो हमको सॉल्व करेगा। बट ये आप एक्सेप्शन मीन्स ऐसा नहीं है। सम सिचुएशंस वो रनिंग टाइम में एरर आएगा प्रोग्राम का अंदर, कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आएगा, रनिंग टाइम में एरर आएगा, वो नोन एज एक्सेप्शंस और रन टाइम एरर। Okay, a Java exception is an object that describes an exceptional condition that has occurred in a piece of code. So you know Java is an object-oriented program. So here exception also represented by some object. So how to represent means while running any exception is occurring means that is represented by some object. Okay. So आप लोगों को मालूम है जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में सारा ऑब्जेक्ट के तरह रिप्रेजेंट करेगा। इधर हमारा एक्सेप्शन में ऐसा है, और रनिंग टाइम में कोई एक्सेप्शन आया मीन्स वो एक ऑब्जेक्ट के तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो एक ऑब्जेक्ट और एक्सेप्शनल कंडीशन रिप्रेजेंट करेगा। सो दैट इज द एक्सेप्शन। ओके, so when an exceptional condition arises, an object representing that exception is created and thrown in the method that caused the error. So that method may choose to handle the exception itself or pass it on. Either way, at some point, the exception is caught and processed. Okay, whenever an exceptional condition is occurring, so that exceptional condition is represented by an object. In object-oriented programming, Java is object-oriented programming. That is why that exception is represented by an object. And that is normally what is happening means, so whenever an exception is occurring in our code while running the program, so then exception object is throwing. While suppose someone exception is occurred means that is represented by an object, and then just throwing that exception. Okay, so maybe throwing means after throwing, so the suppose it is one exception is occurred in the a piece of method in a method, so then what is happening, so that method is throwing an object, that object is represented by a exception. So maybe sometimes that method itself process the exception, sometimes it is processed by some other way. So that is a generally, so while throwing an exception, sometimes the which piece of the code, suppose most probably some method is throwing an error means that method will process that exception, and sometimes methods are not process the exception, they are handling, they are passing that exception to some other piece of codes. So हमारा प्रोग्राम में क्या है, समटाइम्स एक्सेप्शन का चांस है, वो एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमारा कोड मोस्ट प्रोबेबली हमारा कोड का अंदर मेथड है, वो मेथड क्या करेगा, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो जस्ट लाइक हमारा क्रिकेट बॉल थ्रोइंग है ना, ऐसे कुछ एक थ्रोइंग। सो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या करेगा, वो मेथड इटसेल्फ उसका थ्रोइंग एक्सेप्शन हैंडल करेगा और प्रोसेस करेगा। बट सम केसेस क्या करेगा, वो मेथड प्रोसेस नहीं करेगा, वो अदर पीस ऑफ कोड, हमारा प्रोग्राम में बाकी कोड है, वो कोड का अंदर कोई पीस ऑफ कोड हम लिखेगा और एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। So that also chance is there. So normally exceptions can be generated by a Java runtime system, or they can be manually generated by your code. So the most of the cases in Java programming, so exception is normally generating by the JRE, Java runtime system or Java runtime environment. The most of the cases. So while running, when a program is running, at that time exception is throwing by the Java runtime system. But manually generating the exception also possible in Java. Okay, Java runtime system is generating exception, plus some cases through a manual process. Through a manual process means we have to write some code for generating exception. That also possible. So Java में हमारा Java प्रोग्रामिंग में मोस्ट ऑफ द केसेस से क्या करेगा, वो हमारा जावा के रन टाइम सिस्टम है, उसका हम क्या बोलेगा, JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, वो जनरेट करे एक्सेप्शन, वो जनरेट करेगा, उसके बाद मैनेज करेगा मीन्स हम कोड लिखने चाहिए मैनेज करने के लिए, और हमको खुद से करने के लिए, खुद से जनरेट मैन्युअली क्रिएट करने के लिए कोड्स और कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन जावा.
सो ऑटोमेटिकली जावा रन टाइम सिस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करेगा या मैन्युअली करेगा, that is also possible in Java. So once again, what is an exception means? It is a runtime error. So why I am specifying runtime error means compile time there is no error but running time error is happening. Okay, exception का मतलब क्या है? वो हमारा प्रोग्राम रनिंग टाइम में एरर आएगा, दैट इज अ एक्सेप्शन. क्यों रनिंग टाइम बोला मीन्स नॉर्मली हमारा प्रोग्राम में क्या व्हाट इज हैपनिंग, प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर हो गया, बट ये एक्सेप्शन मीन्स ऐसा नहीं है, रनिंग टाइम में कोई एरर है मीन्स दैट इज अ एक्सेप्शन. ओके, सो नेक्स्ट वो जावा में कैसे है मैनेज करेगा ये एक्सेप्शन. So how to handling or how to manage the Java? So for that purpose in Java so normally using 5 keywords. Okay, so what are the keywords means try, catch, throw, throws, finally. So these 5 keywords normally using in Java to handle the exceptions. Okay, Java में exception handle करने के लिए हम 5 कीवर्ड यूज करेगा. तो 5 कीवर्ड कौन कौन से मीन्स ट्राई है, कैच है, थ्रो है, थ्रोस है, फाइनली है. इधर देखो थ्रो है, थ्रोस है, ये दोनों अलग अलग है. थ्रो एंड थ्रोस दोनों अलग अलग है, उसका प्लूरल बहुवचन ऐसा कुछ है, थ्रो का प्लूरल फॉर्म थ्रोस ऐसा नहीं है, तो अलग अलग पर्पस है. ठीक है, so these are the 5 keywords we are using in Java for handling the exceptions: try, catch, throw, throws. Okay, so how to use these keywords means normally these keywords are using as a block of code. Okay, so that we have to tell try block, catch block, finally block as a. So already I told there are 5 keywords are there: try, catch, throw, throws, finally. Okay, and the most of these keywords, that is a try, catch, finally, so these are just handling as a block of codes. Okay, this is a, here I think in the PPT we are seeing the these blocks and just representing these are in the blocks. Maybe sometimes so multiple catches are possible. Okay, एक try block, उसके बाद so after that catch block, again catch block, so that means it is known as the multiple catch blocks. So that is also possible and finally also possible. So अभी मैं बोल रहा हूँ हमारा जावा में 5 कीवर्ड यूज करेगा फॉर हैंडलिंग द एक्सेप्शंस. वो 5 कीवर्ड कैसे यूज करेगा मीन्स ए ब्लॉक की तरह यूज करेगा. ट्राई के साथ एक ब्लॉक है, कैच के साथ एक ब्लॉक है, फाइनल का ब्लॉक है, इसी तरह ब्लॉक है. ओके, ए ब्लॉक मीन्स ए ब्लॉक का अंदर हमारा नॉर्मल कोड आएगा, वो एक्सेप्शन के बाद क्या करेगा ऐसा कोड लिखना चाहिए. ओके, सो दैट इज द ब्लॉक. ओके, जावा में ये 5 कीवर्ड कैसे यूज करेंगे, 5 में ये ट्राई, कैच, फाइनली कैसे यूज करेगा मीन्स एक ब्लॉक के तरह यूज करेगा. ब्लॉक का मतलब सो पीस ऑफ कोड है, एक कर्ली ब्रेस ओपन करने के बाद एक क्लोज करेगा, उसका अंदर एक पीस ऑफ कोड है, तो 3-4 लाइन कोड और हमारा ऊपर के डिपेंड है. ओके, so that is the block of codes. So next just to see, I am repeating what is the exception. What is exception means it is a runtime error. So you just see this code. So here I just declared a one class. So that is a very simple Java program. For the starting we are using this type of codes from the starting. So that is I'm not creating any object or nothing, and simply I just want to print some messages. So here you see there is a class, that is a class x0 exe0, that is x0 xi0, that is representing xi0, and inside the class there is a main method and some variable d equal to 0 and some division operation, some system.out to print. Okay, so printing some messages. I am not creating any object or anything, so just printing some messages and some arithmetic operation. Okay, इधर देखो हमारा मेरा कोड देखो, एक सिंपल जावा प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम का अंदर ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बनाना ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है. एक क्लास डिक्लेयर किया था, क्लास का नाम है xi0 exe0, शॉर्टली exe0 xi0 है. इसका अंदर हमारा एक मेन है, मेन का अंदर एक वेरिएबल डी है,
डी का एक 0 असाइन किया था, बाद में वो प्रिंट किया था एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का अंदर. सो देयर इज अ मैसेज, दिस इज बिफोर डिवीजन. उसके बाद एक डिवीजन है एंड उसके बाद अगेन एक मैसेज है. तो इसी तरह एक सिंपल प्रोग्राम है. इधर हमारा कोई एक्सेप्शन हैंडल ऐसा कुछ नहीं है, एक सिंपल कोड है. सो हाउ दिस एक्सेप्शन इज कमिंग आई विल शो यू. So the screen one one Java program is the same program. So that is the class is starting exe0.java, and then inside there is a main. So there is a normal main. So after that, inside the main, I declared a variable d equal to 0. So then there is a message, that is a printing before division, and after that there is a division, and finally there is one more message through system.out.println, that is before division a, after division. Okay, after division. This is the program. Okay, next what I am doing, I am just going to compile this program. Okay, now my command prompt is visible now. Just put a message. Command prompt. Okay, thank you. So what is our program name? Program name is exe0. So I am compiling this program. So Java C. Okay, exe0.java. So this program I am compiling. Okay, you see, there is no error in this program. So if there is no error means it will display here. अभी इधर कोई error नहीं है. So एक बार program come to जाओ. So this is the program you see. So there is no error. Code, this code you are seeing ना, there is no error. Okay. So error means अभी क्या किया था मैं, compile किया था. So compile time कोई error नहीं है. Okay, normally हम program क्या है, compile time है, कोई error means compile time आएगा. अभी मैं program compile किया था, उसका अंदर कोई error नहीं है. ठीक है. So compile time there is no error. Next I am going to running this program. So that is Java exe0. Okay, first compiled, no problem. So it is executed, the class file is generated, and now I am going to run in this program. Okay, so running time you see. So pela before division. Okay, before division. Again go back to the our code. You see, so first line before division. So हमारा आउटपुट में बिफोर डिविजन ए, उसके बाद देखो बिफोर डिविजन, उसके बाद नथिंग इज देयर, सम एरर इट इज शोइंग. ओके, सो व्हाट इज द एरर? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन. ओके, क्या है? एक्सेप्शन in thread means Java thread. I will next class I will explain the thread, no problem. Main का अंदर एक exception है. So what is the exception? वो exception कैसे represent करेगा? java.lang.arithmetic exception. So there is a symbol. This symbol is indicating division by 0. Okay, अभी क्या हो गया? हमारा compile time हमारे प्रोग्राम में कोई error नहीं है, but running time में error है. Running time error means that is the exception. Running time error है, वो तो represent किया था इधर exception in main है. क्या exception का नाम इधर है? java.lang.arithmetic exception, that is divided by 0. हमको मालूम है division by 0 is possible नहीं है. So this is the example of an exception.
So clear है ना? So again you have to come back to our this program. Yes, you see रनिंग ए एग्जीक्यूट किया था बिफोर डिवीजन, उसके बाद इधर देखो, इधर 42 इंटू ए इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय डी ए। सो पहले मैं डी का वैल्यू 0 असाइन किया था, अभी 0 से इधर मैं डिवीजन करने के लिए ट्राई किया था, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इधर एक एक्सेप्शन आएगा, दैट इज रनिंग टाइम। हमारे सिंटैक्स में कोई एरर नहीं है, इसलिए कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं है। ओके, कंपाइल टाइम इधर कोई एरर नहीं है। So compiled, so compiled while running time it is error, program running time में एक error है, this that is why it is called as an exception। इधर एक exception आया था, so इधर से this is abnormal condition, ये condition क्या है, एक abnormal condition, इसलिए program इधर से exit आएगा, इसके नीचे नहीं गया था। ओके, so इधर से एक exception आया था, इधर स्टॉप, प्रोग्राम स्टॉप किया था, एरर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट पे एरर डिस्प्ले किया था, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं किया था। सो दैट इज the exception. Now what we are going to do, so we are just handling this exception. How to handle this exception? Okay, so this program is just a bit net problem. Okay, so this program is now, it's okay, you see now this program, okay, program में compile time कोई error नहीं है, run time में error आया था। Okay, so this is the exception condition. Now how to handle this exception? So here what is happening, that is I already discussed, Java runtime system detects the attempt to divide 0. So it constructs a new exception object, then throws that exception. I already told Java में पूरा exception means it is represented by a object. So that object is throwing. So here what happened, हमारे केस में जावा रन टाइम में एक एक्सेप्शन आया था और रिप्रेजेंट बाय एन ऑब्जेक्ट और थ्रो किया था। सो अभी थ्रोइंग टाइम क्या किया था, नॉर्मली हम क्या करेगा, एक हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है, हम एक बॉल थ्रोइंग मीन्स दूसरा आदमी वो पकड़ने के लिए ट्राई करेगा, सो दैट इज अ कैच। इधर ही सेम कंसेप्ट है, थ्रोइंग एंड कैचिंग। हम इधर क्या किया था, हमारा जावा रन टाइम सिस्टम एक एक्सेप्शन थ्रो किया था, बट इधर कोई कैच नहीं किया था, इसलिए एरर। ओके, सो अभी कैसे एक्सेप्शन हैंडल करेगा, मीन्स ये थ्रोइंग टाइम में हम क्या करना चाहिए, कैच करना चाहिए। सो वो चीज के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज करेगा। सो द causes of exception here exists stop is because once exception has been thrown, it must be caught by an exception handler to deal with immediately. So whenever Java system is throwing an error, throwing an exception, so you had to handle by just throwing time, you had to catch that one and handle, you have to handle. So here there is no catching and handling, so that is why exception occur. So next, how to handle this exception. Okay, so handling exception is also a very easy thing. So very easy thing means here just you see the program. So this also the same program but some extra code. हम जस्ट बिफोर हम एक कोड डिस्कस किया था ना, वो सेम कोड है बट इसके साथ थोड़ा सा लाइन ऐड किया था, क्या चीज के लिए, मीन्स हैंडलिंग द एक्सेप्शन। सो इधर सो फर्स्ट प्रोग्राम क्लास का नाम exec2। सो मेन स्टार्ट किया था, सो मेन का अंदर पहला 2 वेरिएबल इन डी एंड ए। सो उसका अंदर 2 वेरिएबल है, डी एंड ए इंटीजर टाइप पे। उसके बाद देखो एक ट्राई स्टार्ट किया था, ओके, एक ट्राई ब्लॉक। सो ट्राई के बाद एक कर्ली ब्रेस ओपन करना चाहिए। सो इसका अंदर 3 लाइन है, सो वो क्लोज किया था इधर। सो दैट इज नोन एज अ ट्राई ब्लॉक। ओके, ट्राई ब्लॉक का अंदर क्या करना चाहिए, हमको कोई सस्पेक्ट है, कोई डिवीजन करना चाहिए, उसी टाइम कोई 0 का डिवीजन का चांस है, उस इस तरह हमारा कोड लिखने के लिए वी आर सस्पेक्टिंग दैट देयर इज अ चांस ऑफ एक्सेप्शन, दैट टाइप ऑफ कोड वी हैव टू पुट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। कोई एरर का चांस है, कोई रन टाइम एरर का चांस है, मींस हम क्या करना चाहिए, वो पीस ऑफ कोड हमारा ट्राई ब्लॉक का अंदर डालना चाहिए। इधर मैं क्या किया था, डी का 0 है, सो a इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय डी, सो सी डिवीजन बाय 0 है। सो इधर एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए चांस है, इसलिए मैं ये 3 लाइन इसका अंदर डाल दिया और ट्राई का अंदर डाल दिया।
सो ट्राई से एक बार ट्राई यूज करने के बाद हम क्या करेगा, इधर कोई एक्सेप्शन मीन्स एक ऑब्जेक्ट थ्रोइंग है, जावा रन टाइम सिस्टम एक ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा. सो थ्रो इन टाइम हम कैच करना चाहिए, जस्ट लाइक बॉल इज थ्रोइंग वी हैव टू कैच. सो हम और ट्राई के बाद एक कैच ब्लॉक डिक्लेयर करना चाहिए. ओके, सो बिना कैच और बिना फाइनली ट्राई इज नॉट पॉसिबल. ट्राई इज इंडिपेंडेंट यूज ऑफ ट्राई इज नॉट पॉसिबल. ट्राई के साथ कैच चाहिए या फाइनली चाहिए, और फाइनली का केस हम बाद में एक्सप्लेन करेगा. अभी देखो कैच का साथ एक और ब्लॉक, सॉरी ट्राई का साथ एक और ब्लॉक चाहिए, दैट इज अ कैच ब्लॉक. ओके, कैच ब्लॉक कैसे डिक्लेयर करेगा, कैच एंड कैच के बाद एक फंक्शन का ब्रैकेट, उसका अंदर एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए. एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन मीन्स एक जावा हमारा लैंग जावा लैंग पैकेज, दैट पैकेज इज बाय डिफॉल्ट हमारा जावा प्रोग्राम का अंदर है, उसका अंदर एक क्लास है एक्सेप्शन. सो इसका ऑब्जेक्ट है एक्सेप्शन ई. सो हमारा कैच का ये मेथड, कैच का ब्रैकेट का अंदर एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट चाहिए. ओके, एक्सेप्शन वेरिएबल रिप्रेजेंट करना चाहिए. इधर थ्रो इन ट्राई का अंदर कोई एक्सेप्शन थ्रो मीन्स वो ई का अंदर रिसीव करेगा. ठीक है, तो उसका अंदर देन कैच का ब्लॉक इधर स्टार्ट करेगा. इधर एक कैच आल्सो एक ब्लॉक है, उसका अंदर हम एक्सेप्शन के बाद कोई कोड रन करना चाहिए और कोई मैसेज हमको चाहिए. सो वो टाइप ऑफ कोड हम एक कैच का अंदर डालेगा. ठीक है, तो इधर हमने क्या किया था, उसका अंदर वो क्यों एक्सेप्शन आया था, डिविजन बाय 0, वो मैसेज इधर डाल दिया. आपको अलग कोड चाहिए मीन्स अलग कोड इसका अंदर डालेगा. इधर एक सिंपल एग्जांपल है. वो फिनिश करने के बाद एक और line of message. So after the catch statement. Okay, so what is happening means here while running the program, so any exception is happening means that is handled by that try block. So try block का अंदर है वो exception के guard करने के लिए, रन टाइम error solve करने के लिए हम एक try block introduce किया था. सो ट्राई ब्लॉक का अंदर हम 3 लाइन्स ऑफ कोड डाल दिया, कोड डाल दिया. क्यों डाल दिया मीन्स हमको सस्पेक्शन, हम सस्पेक्ट करेगा उसमें एक्सेप्शन का चांस है. सो व्हाइल एक्सेप्शन इज हैपनिंग मीन्स और ट्राई ब्लॉक का अंदर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, जावा रन टाइम सिस्टम एक ऑब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट जावा रन टाइम सिस्टम थ्रो करेगा एक्सेप्शन का टाइम. और थ्रो इन टाइम में क्या करेगा, हमारे पास ट्राई के बाद एक कैच ब्लॉक है, कैच ब्लॉक का अंदर एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट दैट थ्रोइंग ऑब्जेक्ट है ना, दैट रिसीव करेगा. सो आफ्टर दैट वो कैच ब्लॉक काम करेगा, देन वो प्रोसेस करेगा. सो दैट इज द exception handling. To guard against and handle the runtime error, simply enclose the code that you want to monitor inside the try block. Okay, so immediately following the try block, that includes a catch clause that specifies the exception type that you wish to catch. Okay, so exception, there is an exception. So along with the exception, in the functional bracket is there, inside the bracket there is a object is representing, so which kind of exception is throwing, so that type of exception specifying the inside the catch, and that's just representing that one. And finally, by after running this program, we are getting this output. So that is a division by 0 after the catch statement. Okay, so again we have to just see this program how to run. I'm sharing this one, this program. Okay, I think so here one code is there. So first I started with a class, and what is the class name is the same example only, exec2. So second number for second program, exec2, like that I put exec2. Then inside the public static void main, you just see there is a integer d and a. So then we are starting the try block. So up to this is the try block. Okay, so try block is say monitor a block of code. So what is the monitoring means? There is an exception chance or not. So that is monitoring here. And here, so what is it doing inside? First of all, I am assigning d equal to 0, and after that I am assigning a equal to 42 divided by d.
So that is a division by 0. Then after that one message, that is a this will not be printed. So message itself I am putting, it will not be, there is no chance to print this one because here there is an exception. Okay, here there is an exception. Exception means whenever the code execution is reaching here, it is throwing an error, automatically it is coming to the catch block. So there is, I put a arithmetic exception. So here, so in Java, different type of exceptions are available. So all in commonly we will tell it is an exception. In particularly here, we are division by 0 is the, that is it is a division by division, addition, subtraction, multiplication. These are all known as arithmetic operation. So that is related to this, any exception means that is arithmetic exception. So that is why I put here arithmetic exception. Okay, so it is whenever exception generating here, it is coming to your catch block, and it is, that is receiving by this E. And after that inside I am putting, there is a one message, this is my own message. So what I am telling, there is a division by 0. After finishing this one, and code is going to here. Okay, that is means it will print after catch statement. अभी एक बार repeat करें. अभी इधर देखो, ये तो वेरी सिंपल प्रोग्राम है. सिंपल प्रोग्राम मीन्स नॉर्मली हमारा जावा प्रोग्राम एक्सिक्यूशन मेन से शुरू करेगा. मेन से शुरू करेगा मीन्स इधर से शुरू करेगा. पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर किया था डी एंड ए, उसके बाद कोड इधर जाएगा. इधर जाएगा मीन्स हमारा ट्राई ब्लॉक है. ट्राई ब्लॉक का अंदर मैं 3 लाइन ऑफ कोड डाल दिया. क्यों इधर ट्राई ब्लॉक मीन्स मैंने को मालूम है इधर एक एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए चांस है, इसलिए मैं ये तीनों लाइन ये ट्राई ब्लॉक का अंदर डाल दिया. ट्राई ब्लॉक इधर से शुरू करेगा, इधर से एंड करेगा. ओके, ट्राई ब्लॉक का अंदर देखोगा क्या है हमारा 3 कोड. पहला डी का वैल्यू 0 दे दिया, उसके बाद मैं 42 डिवाइडिंग बाय द डी. ओके, इधर डिवीजन है, उसका रिजल्ट एक ए में असाइन किया था. अभी इधर क्या हो गया, इधर डिवीजन बाय 0 है. सो इधर एक एक्सेप्शन जनरेट हो गया. सो इधर एक्सेप्शन जनरेट करने के बाद ये लाइन यही एग्जीक्यूट करेगा. इधर एक्सेप्शन जनरेट आएगा. एक्सेप्शन जनरेट मींस जावा में एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट इधर से एक ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा. थ्रो इन टाइम वो कहा जाएगा, इधर कैच इधर जाएगा. सो इधर क्या किया था, इधर मैं ब्रैकेट का अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया. जनरल में एक्सेप्शन बोलेगा, बट इधर मैं स्पेसिफिकली अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज किया था. क्यों मीन्स हमको मालूम है इधर डिविजन है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वो पूरा अरिथमेटिक ऑपरेशन है, इसलिए मैं इधर अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज किया था. सो इधर से एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा, और थ्रो आने के बाद वो ई में रिसीव करेगा. ओके, ठीक है, ई का यूज बाद में मैं एक्सप्लेन करेगा. अभी क्या है, सो हमारा प्रोग्राम इधर से इधर आएगा, एक कैश ब्लॉक का अंदर आएगा. ओके, कैश ब्लॉक का अंदर क्या है, मैं एक मैसेज डाल दिया डिवीजन बाय 0, वो हमारा आउटपुट में प्रिंट आएगा. बाद में एक कैच ब्लॉक फिनिश करने के बाद कोड नीचे जाएगा. ओके, नीचे जाएगा मीन्स इधर नीचे में एक ही लाइन ऑफ कोड डाल दिया, दैट इज आफ्टर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके अंदर आफ्टर कैच स्टेटमेंट. ठीक है ना. सो दिस इज द प्रोग्राम. सो नेक्स्ट व्हाट इज आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट running this program. So our program name is exe2 exercise2. So I want to run this program. So first clear the screen. This is good, I think. And I am compiling the program Java C. Okay, so I am compiling Java exe to Java, exe2.java. Okay, compiling. Okay, this program is compiled, there is no error. So next I want to run this program. So running के लिए हम Java command use करेगा, Java exe2. Class is not required. Okay, so just running this program. Now you see this program there is no error. Okay, तो इसके पहले हमें एक प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था, उधर डिवीजन का टाइम एरर आया था, बट इधर कोई एरर नहीं है. तो पहला डिवीजन बाय 0 आएगा, उसके बाद और डिवीजन और रिजल्ट ऐसा इधर कुछ नहीं है. सो
after the catch statement add. एक minute. So once again, no. So where is the command prompt? Not seeing command prompt. Yes. Here what is happening? Okay, division के साथ ये इधर आना चाहिए. Okay, so I just changed this program once again. Okay, you come back to this program. So I want to put arithmetic. Arithmetic exception, and here I am putting one more code here for just for readability. Okay. So I'm putting before division. Okay. So there is no error, but I want one more message. So while this is execute or not, we want to see ना ये पहले ये execute करना, ये इसका अंदर जाने के बाद एक मैसेज चाहिए. Then only we have to know try block is execute or not. Okay. पहले इसका अंदर एक मैसेज है, उसके बाद कैच का एक मैसेज है, उसके बाद सिस्टम. ओके. Yes, again I am compiling just to see. Okay, compiled. There is no error running. Now you see before division. So first it is coming before division. Okay, before division means so in our code इधर है. So पहले a execute t equal to 0 before division इधर है हमारा कोड का अंदर. ठीक है. So इधर से डिवाइड करेगा, बट इधर हमको एक्सेप्शन आएगा. सो ये लाइन नहीं एक्सिक्यूट करेगा ऑटोमेटिकली, इधर से एक्सेप्शन थ्रो करेगा, कैच का अंदर आएगा. ठीक है. तो कैच का अंदर आएगा, ये प्रिंट करेगा. देखो इस एक मिनट. कैच का अंदर आने के बाद डिविजन बाय 0. कैच का अंदर कहाँ है? तो क्या है? डिविजन बाय 0 है. यू जस्ट सी दिस प्रोग्राम. ओके, ये प्रिंट करने के बाद बिफोर डिविजन प्रिंट करने के बाद इधर गया था डिविजन बाय 0. वो कैच पूरा फिनिश करने के बाद उसके नीचे जाएगा. दैट इज बाय नॉर्मल फ्लो ओनली. ओके, आफ्टर कैच स्टेटमेंट. सो यू सी दी हियर after catch statement. So now I think this is almost clear, a simple way how to handle an exception. Okay, how to handle an exception? There is a very simple है. only दो चीज है. क्या है दो चीज? मीन्स हमको कोई डाउट है, कोई पीस ऑफ कोड का अंदर कोई एक्सेप्शन आएगा मीन्स और डाउट हम ए ट्राई ब्लॉक का अंदर डालना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. ओके. सेकंड स्टेप, ए ट्राई के साथ
एक कैच चाहिए। ओके, इसका काम क्या है मीन्स, और ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन मीन्स वो थ्रो करेगा, एक्सेप्शन एक ऑब्जेक्ट के तरह थ्रो करेगा। सो थ्रो करने के टाइम हमको कैच करना चाहिए। सो कैच करने के लिए एक कैच ब्लॉक, कैच का अंदर हमको कोई मैसेज चाहिए मीन्स वो मैसेज डाला बस। सो दैट इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो up to this point, if there is any error, you please message. Any error? I think it is a very clear. So error का कोई चांस है, सॉरी डाउट का कोई चांस है, कोई error डाउट है? So I think nobody, Manav, no error. Okay. So anybody have कोई doubt है means you please put a message. I will explain. Okay, I think there is so far there is no doubt. Okay, I am going back to this one. अभी इधर देखो, so हमारा ये आउटपुट में डिविजन बाय जीरो है। डिविजन बाय जीरो मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा कैच का अंदर है। ठीक है, कैच का अंदर एक डिस्प्ले करने के लिए मैं एक मैसेज डाल दिया डिविजन बाय जीरो। एक्चुअली उधर क्या एक्सप्रेशन हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम नहीं है मीन्स ये केस में हमको मालूम है और तो एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन में डिविजन बाय जीरो है, बट पूरा केस में ऐसा फाइंड करना मुश्किल है। सो जावा में डिफरेंट अरे इंडेक्स से इंटरप्टेड एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स एक्सेप्शन है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ऐसा अलग अलग एक्सेप्शन है। सो हमको वो सॉल्व करने के लिए, बाद में सॉल्व करने के लिए उसका एक्सैक्ट मैसेज चाहिए। ओके, एक्सैक्ट मैसेज, एक्सैक्ट क्या है हमारा एक्सेप्शन वो प्रिंट करना चाहिए। सो नेक्स्ट वो एक्सैक्ट एक्सेप्शन हम कैसे प्रिंट करेगा, सो दैट इज द नेक्स्ट केस। सो कैसे करेगा मीन्स, so you just come to our program. So this program मैं अभी सो एक्सप्लेन टाइम में मैं बोला इधर एक एक्सेप्शन आएगा, वो एक्सेप्शन इधर से ये लाइन से एक एक्सेप्शन आने के बाद वो थ्रो करेगा, वो इधर आएगा, वो इधर आएगा, वो हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई रिसीव करेगा। सो हमको एक्सैक्ट एक्सेप्शन चाहिए मीन्स हमारा मैसेज के साथ हम वो ई आल्सो प्रिंट करना चाहिए। ठीक है ना? सो इधर इसके पहले प्रोग्राम में क्या किया था, पहले मैं डिविजन बाय जीरो, वो मेरा मैसेज है डिविजन बाय जीरो, उसके साथ सिस्टम जावा रन टाइम में क्या मैसेज, क्या एक्सेप्शन है वो भी प्रिंट करने के लिए क्या करेगा, हम ये ई ऑब्जेक्ट इधर प्रिंट करना चाहिए। इधर प्रिंट करने के मीन्स विथिन विदाउट डबल कोट। ओके, देन एक्सैक्ट ई का अंदर क्या है वो प्रिंट आएगा। ओके, so next I just change this program. So what is my aim is, so no previous program is, so what I done, so we had just printed my message that is division by zero. Okay, so along with I need, so what is the exact Java runtime in thrown error, that also thrown exception, that also I want to print. How to print that one means, I already told whenever an exception is generating, that is first in this case here exception is generating, that time a Java exception object is throwing, that object is receiving by this E. Okay, then what you have to do, you have to just print this E, then you have to get the exact message. So how to print means you just put E in a system.out.println. So here my message is also there plus E without double quote. Then, so inside the E, what is E will get. So I saved this program. Again, I am going to running this one. Okay, first compiling. So compiled, there is no error. So I am going to running this program. So इसके पहले आउटपुट इधर स्क्रीन में है अभी ये, तो पहले बिफोर डिवीजन और सेम बिफोर डिवीजन इधर ही है, उसके बाद इसके पहले क्या डिवीजन बाय जीरो, तो इधर है डिवीजन बाय जीरो है, उसके साथ जावा लैंग एक्सेप्शन, लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का नाम इधर है
वो कैसे आया था वो भी इधर है, so that is divided by 0. This symbol is indicating division, okay, by 0. So the exact message we are getting the exact exception, exact error message, what is happened, okay. So after that try catch statement, the same try catch statement. So this kind of printing, it is possible, okay. So for that purpose we are using that. So E, that is a receiving exception object. Okay, now I think it is clear how to print the exact exception. So we have to in the catch clause, there is an exception object is the, we just print that object, we will get the exact exception error. Okay, for this is for just a printing case only. So there is a different methods of the printing. We can just put E is enough. Sometimes we will put E dot to string. So that is that exception you are converting into string and printing. So nowadays that is not required. Directly you can print the E. Okay. So again coming back to our slide. So okay. So this is the case what I mentioned. Displaying the description of exception. So we are just using just printing the E. Then we are getting the message this one X. So your exception, that is this exception means our, we are just printing this exception that is coming here exception, after that E. Okay, java dot lang dot arithmetic exception divided by 0. So this is what I explained. So next what I am explaining, so multiple catch clause. So earlier what I explained, just before I explained, there is a one catch is there, and some cases more than one catch is possible. If more than one execution could be exception could be raised by a single piece of code, to handle this type of situation, you can specify 2 or more catch clauses, and each catching different type of exception. So in the previous program, so what is specified in our catch block, it is specifically for arithmetic exception. So inside the catch I put arithmetic exception. That means that is specifically for arithmetic exception. And some cases similar same piece of code, here it is generating more than one exception. Sometimes array index bound, or sometimes interact exception. So the same code will generate one or two exceptions. So that case what we have to do, so we have to do to just add one more catch block. So try with multiple catch also possible. So when an exception is thrown, each catch statement is inspected to in order, and the first one whose type matches that of the exception is executed. So that means so multiple try, so try with the multiple catch means so what is doing, so the whenever the exception is generating, that will check each each catch block. So which one is suitable, that will execute. Okay, and the suppose the suitable catch is not one means, so first checking for example, if there is an array index bound of exception generated, but in our program multiple catches are there, and first one is arithmetic exception. So what is our exception doing? While generating exception, that first will check the arithmetic exception. It is not matching. Actually in our program it is generated array index out of bound. So it is just going to the next block. So next block, if it is array index out of bound, that will execute. ओके, सो हमारा प्रोग्राम में समटाइम्स हमको एक ट्राई के साथ 2 और 3 2 और 3 एक्सेप्शन कैच ब्लॉक इज पॉसिबल. वो केस है मल्टीपल कैच क्लॉसेस. ओके, एक ट्राई के साथ 2-3 कैच पॉसिबल है. तो हमारा ट्राई का अंदर एक पीस ऑफ कोड है. वो पीस ऑफ कोड क्या करेगा, समटाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन जनरेट करेगा. डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन का मतलब just like arithmetic exception और array index bound of exception, और उसके साथ क्या interrupted exception. ये सिंगल पीस ऑफ कोड इतना 3 और 4 एक्सेप्शन जनरेट का चांस है समटाइम्स. उसी टाइम्स वो कैसे हैंडल करेगा, सो अलग अलग एक्सेप्शन के लिए अलग अलग कैच ब्लॉक डिक्लेयर करेगा. ओके, सो एक ट्राई के साथ 3 या 4 कैच पॉसिबल, 4 और 5, वो हमारा कोड का ऊपर डिपेंड है. सो ये सिचुएशन है मल्टीपल कैच क्लॉसेस. वो कैसे काम करेगा, वो ट्राई का ब्लॉक का अंदर कौन सा एक्सेप्शन जनरेट आएगा, उसी एक्सेप्शन के मैचिंग क्लॉज
क्लोज ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा. Okay, so you just see this program. So in this program, so there is a program का नाम मल्टी कैच है. ओके, मल्टी कैच का अंदर इसका पहले प्रोग्राम उसी तरफ. सो मेन से शुरू किया था. सो मेन का अंदर एक ट्राई है. सो दिस ट्राई एंड वन कैच टू कैच है. ओके, दिस इज द सिचुएशन. ट्राई विथ मल्टीपल कैच है. सो इसका अंदर देखो, इसका अंदर क्या है मीन्स. सो पहले एक इंड ए का वैल्यू क्या है, आर्क्स डॉट लेंथ. आर्क्स डॉट लेंथ मतलब क्या, आर्क्स क्या, आर्क्स मीन्स हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है. वर्ड मेन का अंदर देखो स्ट्रिंग आर्क्स है. एक स्ट्रिंग आर्क्स मीन्स एक स्ट्रिंग अरे का नाम है. तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आपको मालूम है ना, वो प्रोग्राम रनिंग के टाइम हम प्रोग्राम रनिंग के टाइम और प्रोग्राम का नाम के साथ एक आर्ग्यूमेंट देगा मीन्स तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट. उसको हमारा एक आर्ग्यूमेंट देने का मीन्स इसका लेंथ 1 आएगा. दो मीन्स दो आर्ग्यूमेंट देने के बाद उसका एक का वैल्यू 2 आएगा. दैट इज आर्क्स डॉट लेंथ. और रनिंग टाइम कितना आर्ग्यूमेंट दे दिया उसका लेंथ है. सो हमको कितना चाहिए उतना डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो स्ट्रिंग अरे है, स्ट्रिंग अरे का कोई साइज मेंशन नहीं किया था इसलिए तो हमको कितना चाहिए उतना डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ए का वैल्यू आर्ग का ऊपर आर्गुमेंट हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट का लेंथ का ऊपर डिपेंड है. ओके, सो अभी इंड ए का एक वैल्यू मिलेगा. अब सोचो पहले एग्जीक्यूट का टाइम हम बिना आर्गुमेंट के साथ एग्जीक्यूट करेगा. तो उसी टाइम क्या करेगा, एक का वैल्यू 0 आएगा. एक का वैल्यू 0 मीन्स अभी 42 के डिवाइड 0 सेम केस इसके पहले एक्सप्लेन किया था वो सेम केस आएगा. इधर एक्सेप्शन आएगा. इधर एक्सेप्शन मीन्स वो जस्ट इधर से एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इधर आएगा कैच के पास आएगा. सो कैच के पास पहले क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है. ठीक है, हम इधर डिविजन बाय 0 है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है. ये कैच ब्लॉक फर्स्ट कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में ये पूरा कैच फिनिश करने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल आफ्टर ट्राई कैच में वो मैसेज आएगा. दैट इज वन केस. ओके, एंड सेकंड अगेंस्ट द सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा. तो उसी टाइम एक आर्ग्यूमेंट एग्जीक्यूशन के टाइम एक आर्ग्यूमेंट पास करना चाहिए. सो एक आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद क्या हो गया, हमारा एक का वैल्यू 1 आएगा. एक का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, इधर से बी डिवाइड करेगा. ओके, सो सॉरी 42 डिवाइड बाई ए. एक का वैल्यू 1 है, सो 42 आएगा. बी का वैल्यू 42 आएगा. कोई एरर नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है. उसके बाद हमारा एक अरे सी है, एक इंटीजर अरे है, उसका अंदर एक ही मेंबर इनिशिएट किया था. अब देखो अरे का अंदर एक ही में हमारा अरे का साइज एक है. ओके, एक में उसका इंडेक्स 0 है, साइज एक है. वो जगह में वन वैल्यू है 1, उसका वैल्यू 1 है. उसके बाद मैं क्या किया था, अरे का 42 पोजीशन में 99 ऐसे ही किया था. हमारा अरे का लेंथ 1 है, उधर 42 पोजीशन नहीं है में, बट 42 में 99 असाइन किया था. उसका मतलब इधर एक्सेप्शन है. सो इधर एक्सेप्शन है मींस सो इधर से एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जनरेट करेगा और थ्रो करेगा. वो थ्रो करेगा मींस क्या करेगा, फाइनली फर्स्ट इधर आएगा मींस वो चेक करेगा इधर अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ये एरर अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं है. सो उसका नीचे कैच ब्लॉक का अंदर जाएगा. सो इधर देखो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन है. ओके, इधर क्या है, अरे इंडेक्स में प्रॉब्लम है. 42 इंडेक्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास ओनली 0 इंडेक्स है, एक ही मेंबर है 0 इंडेक्स है. सो ये एक्सेप्शन इधर मैच आएगा. ठीक है, देन इसका अंदर क्या है वो प्रिंट करेगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स प्लस वो मैसेज प्रिंट करेगा. वो फिनिश करने के बाद इधर जाएगा प्रोग्राम. ओके, इधर जाएगा मींस आफ्टर ट्राई कैच. सो व्हाट you just see how to execute means first you had to run like this. कंपाइल करने के बाद जावा मल्टी कैच, वो प्रोग्राम का नाम है. मल्टी कैच हमारा प्रोग्राम का नाम है. ठीक है, देन एक का वैल्यू 0 आएगा. सो एक्सेप्शन प्रिंट करेगा. सो दैट इज द फर्स्ट केस. सेकंड केस मल्टी कैच के बाद हम एक आर्गुमेंट दिया टेस्ट आर्ग, दैट मींस 1 आर्गुमेंट दे दिया. देन एक का वैल्यू 1 आएगा, तो अरे इंडेक्स बाउंड ऑफ एक्सेप्शन आएगा. सो यू जस्ट आई विल demonstrate this one. So
multi-catch. Okay, the same program. You just see here. Additional, I am doing one more thing. Control C. That means after division, I am printing the value of this one. Control V. I am putting B and printing B. Okay, remaining the case is same. This is the try block. So try block under the first int a equal to arg dot length, and after that a का value print किया था. So then again division by a. If they are not passing any argument, it is 0. Then here one exception generating. So it is going to here arithmetic exception executing, and this line also executing program ends. And the second case, we are running this program with one argument. So one argument is a का value 1 आएगा. So this 1 is printing, and then division by 1, a का value 1 है, division by 1, b का value 42, then printing that value. Okay, so after that here is the problem. So here is, I am just using in this example, the array C has two values, 1 and 2. That is in the index 0 and 1 में 1 and 2 value है. So then after I am trying to assigning the value 99 in the 42 position. So that is exception. The exception generated, it is coming to this catch block. This is arithmetic exception. So here what is generated? Array index kind of exception. So it is not catching here. It is coming to here, and that is a arrow index out of exception. So this line is executing and it is printing. Okay, and that is after that it is printing this line also. Okay, so you see I am going to compile and running this program. So I'm taking this command prompt. Our program name is multi-catch. So first I want to clear this one. Okay, so Java C multi-catch.java. Okay, compiling. So it is compiled. There is no error. So I am going to running this program. First I am running without any command line argument. Okay, so that is Java. So multi-catch. अभी इसका कोई command line argument नहीं है. So running this program, you see. So a का value 0 है. 0, a equal to 0. Then divided by, so corresponding catch का अंदर गया था. So catch का अंदर ये मैसेज आया था. उसके बाद पूरा catch finish करने के बाद हमारे पास एक मैसेज है after try catch block. You just see this program. Sir? Okay. Yes, ma'am. The 4 bajne, it's about to. Yeah. I will finish. Clock is about to strike 4. Yeah. Okay. Another 2-3 minutes I will finish. Okay. So you just see this program. So arg dot length here. First I without any argument I run the program. That is why a equal to 0. This printed. Then here exception generated. Then corresponding arithmetic exception. Then corresponding catch block is executed. Okay. So that is the output we see. So a का value a equal to 1 displayed. After that division by 0 message displayed. Then after the all catch block finished, the this is executed. So you say again, I'm running the same program with the 2 arguments. Okay. So running multi-catch. Sorry, only I am passing one command line argument. Just to put hello. That is my command line argument. तो इसके पहले देखो, इधर देखो, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट इधर एक आर्ग्यूमेंट हेलो दे दिया. सो आई एम जस्ट एंटरिंग. It's not coming. System is busy. Just waiting. Yeah, it's executed. So something system is busy. That is what happened. Now you see a का value 1 है. Then it is divided. Okay, b equal to 42. 42 divided by 1. That's b का value 42. Then after that, what is the array index out of bound? The exception is happened. Array index out of bound exception
42. Okay, this time it is executed second catch block, and after everything finished, then it is coming after try catch block. So you just see this program. Okay, this time it is printed a equal to 1, then b का value print किया था, तो बाद में इधर से exception generated. So this try catch is not executing, it is executing this try catch, this catch block. Then finally this message also it is printed. So I think this is today's class. So we will continue tomorrow by throw and throws. So just finally these are all pending. So today I am leaving. So any doubt means you please message it. So my number I think you know 740-120-9457. Okay. So through WhatsApp I will answer, and the remaining part I will take on the next class. So through NIMI portal I will announce when is next class. Okay. Thank you. Thank you, madam. Okay, thank you, sir. Okay. Okay. Bye. Bye.